It's being called the return of the Tapaswi Modi. In the serene environs of Kanyakumari, Prime Minister Narendra Modi early this morning performed puja at the Vivekanand Rock Memorial. Pictures captured him in deep contemplation, adopting the Dhyan Mudra. He engaged in rituals like the Surya Namaskar. He also offered water or arghya to the sun god. In the backdrop of 33-year-old images of the same location, they've also surfaced where the Prime Minister had visited the Vivekanand Rock Memorial decades ago. This time, of course, the Prime Minister is meditating for his vision of a Vikasit Bharat. And throughout this period, the Prime Minister has maintained a very disciplined regimen. Total silence, liquid diet, coconut water, grape juice and other liquids. Now, Prime Minister Narendra Modi has been deeply inspired by the life, teachings and philosophy of Swami Vivekanand right from his childhood. A lot of reactions that are coming in. I'll get you political reactions in a moment, but listen into some of the reactions that are coming in. दिव्य स्थान है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है विवेकानंद जी विश्व में प्रसिद्ध हुए थे और वह साधना कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास उनको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और ध्यान से, और ऐसी स्थिति में वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं और ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद उनकी शक्ति और ऊर्जा मिलेगी जिससे कि वह उनको वो सक्षम होंगे अपने कार्य करने में। So the Prime Minister has crisscrossed across the length and breadth of our country in the run-up to the 2024 elections and throughout the election campaign. Now that that campaign has ended, he is in Kanyakumari. So while the Prime Minister is meditating, the political arena outside is virtually exploding. The opposition India Alliance members have criticized the Prime Minister's meditation, calling it a calculated electoral tactics aimed at swaying voters in the 7th and the last phase of polling, also calling it a violation of the Model Code of Conduct. Listen in. जो परमात्मा भेजे हुए हैं, जो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसे ध्यान करने का आवश्यकता क्या है? अब उसको जीवधारी भी नहीं बोल सकते, प्राणी भी नहीं बोल सकते, और वो ध्यान में लगाने की नौटंकी क्यों कर रहे हैं? इस नाटक की कोई आवश्यकता नहीं। खुद परमात्मा भेजा हुआ मानते हैं, अपने आप को भगवान ही मानते हैं, तो फिर ये नाटक नौटंकी करने का आवश्यकता क्या है? देखिए, ये प्रभावित करने के ही प्रयास है। मतलब मोदी जी फिर आदेश कर दे, कोई मीडिया चैनल कोई दिखाएगा नहीं मेरे बारे में 1 तारीख तक के, तो प्रचार करने ही गए हैं। म्हणजे त्यांना कळून चुकलेलं आहे की आपण काही पुन्हा निवडून येत नाही आणि त्या प्रत्येक सभेतली त्यांची वक्तव्य जर पाहिली, त्या वक्तव्यातली विसंगती पाहिली, तर मला वाटते त्यांना थोडी विश्रांतीची आवश्यकता आहे। त्यांनी थोडंसं उपचार करून घेण्याची गरज आहे। म्हणजे त्यांचा बॅलन्स बिघडलेला असं तर दिसते आणि त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं एकतर धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण करायचा तरी पुरेपूर प्रयत्न केला, पण या देशातील जनतेने त्याला काही प्रतिसाद दिला नाही। अरे यार, मोदी जी का स्क्रिप्टेड होता है, फोटोशूट होता है, उनको मूवी करना होता है, मूवी अपना रील बना रहे। अरे नौजवानों को मोदी जी से एक चीज सीखना चाहिए कि रील कैसे बनाया जाए। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका, उसको ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं, बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए, कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी है और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? देखिए, ये सब जो भी है, ध्यान करने में कोई हद नहीं है। मेडिटेशन उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन पहले और अब में ये अंतर है कि उन्होंने उसका पूरा प्रचार प्रसार किया था मीडिया के सामने। मैंने भी पहली बार सुना है कोई ध्यान करने जाता है तो मीडिया और कैमरा को साथ लेकर जाता है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। अब वो करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद लोग कोर्ट में जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। मैं उनके बारे में भी यही कह सकता हूँ कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। 10 साल में अगर कुछ किया होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने सारे हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। So Prime Minister Narendra Modi has a history of embarking on these spiritual retreats
when election campaigns come to an end. You'd recall 2019, he'd meditated at a cave near the Kedarnath Dham. This time, the Prime Minister, of course, is meditating for his vision of a Vikasit Bharat. Remember, Swami Vivekananda repeatedly, and a very well-respected Vedic philosopher, Indian spiritual leader and philosopher, Swami Vivekananda spoke of Vikasit Bharat, India's spiritual nationalism. And that is something that Prime Minister Narendra Modi appears to be attempting to take forward at Kanyakumari. For 3 days and 3 nights in 1892, Swami Vivekananda had meditated at that same rock, which is now known as the Vivekananda Rock, where the Prime Minister is meditating right now. Prime Minister Narendra Modi's early morning pictures at the Vivekananda Rock Memorial have drawn widespread attention. It started with performing puja at the memorial. The location holds tremendous historical and spiritual significance. This is exactly the place where Swami Vivekananda had meditated more than 130 years ago. Early in the morning, Prime Minister was seen engaging in Surya Namaskar rituals. Swami Vivekananda spoke extensively of the importance of yoga, as is Prime Minister Narendra Modi. Now, on his spiritual retreat, the Prime Minister also offered water to Surya, the Surya Arghya. The short video clip showed the Prime Minister offering water to the sea and offering to Surya Narayan. Recent photographs have captured him in deep meditation with the Jap Mala prayer beads in his hands. This time, Prime Minister Narendra Modi, according to those tracking him closely, is meditating for his vision of a Viksit Bharat, or a developed India, by 2047, the 100th year of India's independence. One of the photographs shows Prime Minister Narendra Modi adopting the Dhyan Mudra. Throughout this period, the Prime Minister will be following a very disciplined regimen, total silence, liquid diet, only coconut water and grape juice. So 1st of June is the final phase of voting in different parts of the country, whether it's Uttar Pradesh or Punjab or Bengal, very crucial. But days before the final phase, Prime Minister Narendra Modi is meditating at the Vivekananda Rock Memorial in Kanyakumari. The Prime Minister visited the Bhagwati Amman temple before entering the Dhyan Mandapam, paying respects to Swami Vivekananda. We get you more in this report. A serene retreat with a spiritual aura in the southern part of India. A place of awakening, where Swami Vivekananda had the vision of Ek Bharat, Shresth Bharat. After the hectic campaign, Prime Minister Narendra Modi arrived in Kanyakumari. His first stop was the Bhagwati Amman temple. Wearing a dhoti and a white shawl, Prime Minister prayed at the temple, circumambulated the sanctum, performed aarti and received prasad. At the Vivekananda Rock Memorial, Prime Minister began meditation at 6:45 p.m. on Thursday. The meditation will last 45 hours. According to official sources, Prime Minister will remain in silence and will only consume coconut water, grape juice and other liquids. A post-campaign retreat at a site symbolizing national unity and the vision for a developed India. Bureau Report, India Today.